Hello guys, for those of you जिनकी की who have the following scenario कि उनकी जो कंपनीज हैं उनका एक ही यूजर नेम और पासवर्ड है across multiple such companies and they need to automatically then execute the load all of them together. तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले सर आप इधर आइए और इधर ये जो स्टार्ट पाथ है देन दिस इज गोइंग टू बी योर टैली पाथ, राइट? एंड देन यू सेट इन अ टाइम आउट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड देन you'll ऑटोमेटिकली क्लोज टैली। तो ये टैली का एग्जीक्यूटेबल पाथ जो है आप ये बैच फाइल पे रख सकते हैं एंड दिस कैन बी रन थ्रू अ टास्क शेड्यूलर। The next step, sir, is that you within your tally.ini file here, the you come down here and load all the companies one after another। तो सबका एक एक है तो सबका एक एक पाथ जो है आप इधर से जो है डाल वो जो है वो डाल लीजिए, राइट? तीसरा सर आपको क्या करना है, ये टीडीएल कोड जो है आपको जो है पूरा का पूरा लोड करना। व्हाट इट बेसिकली डज इज as soon as the system start it calls master function 2 and then it puts in the username and the password. And then this is the control key. Control 0, if you want to automate, then you can do it across the same company. Right. And within Tally, what you need to do is, so within Tally, so you can also do it this way, or you can go down to help here. You go down to settings here and you go to startup here and you can load all the companies here one by one. So in startup, all the companies should come one by one here. And then here, enable auto login for credentials. This is yes, and that should actually take care of it. So for those people who have got multiple such companies who want to, automatically extract the data or load all of them at one single password, then this should help. Thanks a lot, and do get us.